Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of the state. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे और जानेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। वेल, द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एसोसिएशन that establishes sovereign jurisdiction within defined territorial borders and exercises authority through a set of permanent institutions. So when we talk about state is basically a political association, and being a political association, it is established through sovereignty, and through this sovereignty it establishes its own sovereign jurisdiction within a particular territory or within a defined territory or a borders, and exercise its authority through a set of permanent institutions. So when we talk about a state, it is nothing but a political association, and being a political association, it has its own powers, it has its own functions, and it establishes its own sovereign control or sovereign jurisdiction within the defined territorial borders. So therefore, whatever rules and regulations which state are going to enact, those rules and regulations would be applicable within that defined territorial borders which state claims, and therefore state as authority will exercise its own authority in that particular territory or in that particular defined territorial border with some set of permanent institutions. So permanent institutions are very important, because through this institution state manifests its power, state establishes its own sovereign jurisdiction, as well as through these permanent institution, and state is recognized as one of the most important institution. Well, जब हम एक स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एक हमेशा पॉलिटिकल एसोसिएशन रहता है, और बिकॉज ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, वो अपनी पूरी जो उसकी पावर है, जो उसकी सॉवरेन पावर है, वो एक विद इन द डिफाइंड टेरिटरी में उसको देखा गया है। हर एक स्टेट की अपनी एक सॉवरेन जुरिस्डिक्शन रहती है, और उसकी वो सॉवरेन जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश करता है अपने मार्क्ड टेरिटरी में। हर एक स्टेट की अपनी एक बॉर्डर रहती है, एक डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर रहती है, और उसी डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर के अंतर्गत जो सारे उसके कानून होते हैं, जो सारे उसके लॉज या फिर रेगुलेशंस रहेंगे या फिर पॉलिसी रहेंगे, वो इम्प्लीमेंट होती रहेंगी। और इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट के पास अपने परमानेंट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। तो ये जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, ये स्टेट को अपनी एक अथॉरिटी प्रदान करते हैं, और थ्रू दिस परमानेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑलवेज एस्टैब्लिश इट्स ओन अथॉरिटी विद इन दैट डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर। तो इसीलिए स्टेट को एक पॉलिटिकल एसोसिएशन कहा गया है, और पॉलिटिकल एसोसिएशन होने के कारण वो अपना जो पूरा सॉवरेनिटी होती है, जो उसकी पूरी जो पावर्स रहती है, वो विद इन अपने डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रहती है। और इसीलिए जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं स्टेट के, वो स्टेट को हेल्प करते हैं टू एस्टैब्लिश इट्स ओन सॉवरेनिटी एज वेल एज टू एक्सरसाइज इट्स ओन अथॉरिटी। मूविंग फॉरवर्ड, therefore these institutions are those that are recognizably public in nature, in that they are responsible for the collective organization of a communal life and are funded at the public expenses.
So therefore these institutions have to be recognizable. They are recognized as a public institutions, and because they're being a public institution, they have certain responsibilities, and these responsibilities are collective in nature. They have to be collective organization of a communal life of everyone, and these institutions are funded at the public expenses. That means public are funding these institutions through by paying their taxes, and therefore the state is a political association, establishes its own sovereign jurisdiction within the defined territorial borders, and exercise its various authorities through those permanent institutions. And these institutions are public in nature because they are accountable towards public. They are responsible for the collective organization of a communal life, and end of the day they are also funded by the public expenses. So this is in short all about the concept of state. I hope you have understood the concept of state. Thank you very much for watching this tutorial, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.